Good afternoon, Vipin. All right, so we were talking about GPS, right? We were in the last class doing GPS. थोड़ा सा लंबा discussion खींच गया था, but we'll now more focus on the topic itself. Remain focused on the little bit knowledge, yes, but also on the examination part. थोड़ा सा structured तरीके से चलते हैं. So we were looking at space segment, the three segments of the GPS system: the space segment, the ground or control segment, and the user segment. क्या चीजें हैं ये? As we said, we were looking at the slides also. In the space segment, there are satellites, 24 active of them, 8 backup, having their own propulsion system, which can be remotely controlled by the ground segment, master control station. These satellites are moving in the orbit, which is 20,200 kilometers from the surface of the Earth, moving at the speed of 3.9 kilometers per second. That's about 14,000 kilometers per hour के स्पीड से चल रहे हैं. एक घंटे में 14,000 किलोमीटर के स्पीड से घूम रहे हैं. बहुत तेज घूम रहा है. Is it very fast? 14,000 kilometers? Yes, sir, but not with respect to Earth. Ah, yes, you got me. With respect to Earth, Earth is moving at 67,000 kilometers per hour in its orbit around the sun, about 67,000 kilometers. So very, very less as compared to Earth's motion. So right now, sitting here, we are moving at 67,000 kilometers per hour. Are we colliding with each other? Oh, sir. When do we collide? When only we move on the Earth. मैं तुम्हारी तरफ जाता हूँ, तुम हमारी तरफ आओगे, तब ना, तभी तक टकराते ना आपस में. Sir. So add this one with speed through water and speed over ground. Okay, so slide पे ही चलते हैं, वहीं उसी से बात करेंगे. We'll talk through the slides only. So all right, so we have noted down some 7-8 points. The last one which you had seen, that minimum of 6, maximum of 12 satellites are visible at all times to any observer anywhere on the Earth, no matter where it is. Always there are satellites to take fix from. How many are required to take the fix? कम से कम कितने चाहिए थे? Minimum 3, sir. Minimum 3. But remember, that was on the surface. 3 required थे, एकदम सही बात. But वहां पे सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था. अगर थर्ड डायमेंशन ऐड करते हैं, हाइट भी, तो मिनिमम 4 की रिक्वायरमेंट होगी. वो चलो अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा when we are face to face on the camera. For 3D position, minimum 4 satellites. For 2D position on the surface, 3 satellites. But we have 6 available at all times, no matter what. Here also we have seen that the solar panels are orienting always towards the sun in order to receive maximum energy. Next one is the ground segment or control segment.
As already discussed, it has got three components: the master control station, monitor stations, and ground antennas. As the name indicates, master control system or station, actually, this is not system, station, is the brains of the whole system. Everything is controlled, command is done from the master control station only. GPS में क्या होना है, everything is decided at this place. Like we gave you the example of the ship, master is deciding everything, what will happen, not happen. But then he needs assistance to get his work done in the right manner. He requires hands. So the monitor station and ground antennas are those support system for the master control station to do what it wants. Remember that on the surface of the earth, there is master control station. There are satellites in the sky. They are transmitting some signals towards the earth. But what they are transmitting is earlier uploaded by the MCS. MCS उनको डेटा देता है ट्रांसमिट करने के, और उसी डेटा को वो वापस नीचे भेजते हैं. So not all the satellites are visible to the MCS. So what it does, it sends some of the data to ground antennas, और ground antennas दूसरे satellites को upload करा देते हैं. Master control station also monitors the location of the satellites, health of the satellites, their trajectory, कहाँ move कर रहे हैं. लेकिन वो सबको फिर से सामने नहीं देख सकता. Not all are visible. So he needs eyes for monitoring all the 24 satellites at the same time, ताकि वो continuous monitor कर सके सारे satellites को. So what to do? There are monitoring stations all across the world. In the friendly states to the United States of America, उन्होंने सबसे डील कर रखी है. तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने कहा ठीक है लगा लो आप अपना मॉनिटरिंग स्टेशन हमारे यहाँ लगा लो. तो बहरीन में है, न्यूजीलैंड में है, अलास्का में है, वर्जिन आइलैंड पे है, डियोगो गार्सिया में है. There are so many places where there are monitoring stations. What is the job of these monitoring stations? They collect information from the satellites. Satellites जो transmit कर रहे हैं, उसमें अपने health information वगैरह भी transmit करते रहते हैं. So it is collected by the monitor station and transmitted to the master control station. तुम्हें जो करना है करो. अब ये डेटा आई थी, मैंने दे दिया. Master control station will analyze that data, decide on the action required, and again send a remote control command back to the satellites for corrections, whatever kind. So that is what is happening in the control segment. Whatever we discussed is on the screen. Read, try to understand. If any doubt, ask me. Of course, there is a location which is given. Where is this MCS located? It is in Colorado Springs Air Force Base Station, Colorado में. There is also an alternate MCS. एक जगह कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, तो उसका alternate दूसरी जगह एक पैरेलल सिस्टम बना रखा है उन्होंने,
ताकि एक जगह कुछ हो जाए, अटैक उटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए तो दूसरी जगह से कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, if any doubt please ask me. सर ये सूडो रैंडम कोड क्या होता है सर? वेरी गुड, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। सो हम इसके बारे में टोटल बात करेंगे, सूडो रैंडम कोड एंड नेविगेशन मैसेज। टॉकिंग अबाउट इट, हमारे जीपीएस रिसीवर को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रायलैटरेशन के लिए? What is the information required? Range and position. Come again? Yes, go ahead. Distance and position. Distance and position. Yes, distance of the satellite and position of the satellites. So pseudo random code is for finding out the range. Pseudo random code से मैं पता करता हूं सैटेलाइट का रेंज कितनी दूर है, और नेविगेशन मैसेज से पता करता हूं उसका पोजीशन, सैटेलाइट का पोजीशन। क्लियर? आगे और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सूडो रैंडम कोड कितने तरीके के होते हैं, क्या करता है, कैसे काम करता है, सब बात करेंगे। नेविगेशन मैसेज डिटेल में बात होगी अभी, बट जनरल आइडिया लग गया? यस यस सूडो रैंडम कोड फॉर व्हाट? सर रेंज नेविगेशन मैसेज Position. और पोजीशन। to find out the exact location of the satellite, position of the satellite. So MCS only will upload all this to satellites. Satellites जो ये दो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं मेरे लिए, मेरे जीपीएस रिसीवर के लिए, वो मास्टर कंट्रोल स्टेशन ही देता है उनको। सबके अलग अलग कोड्स होंगे, या कुछ कोड सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं। All that is given by the MCS only, uploaded by the MCS. How? कैसे अपलोड कर रहा है? Through the ground antennas. MCS is also making the satellites move in their predicted path. जिधर जाना है उधर ही जा रहा है, ये भी मॉनिटर करता है, और अगर इधर उधर होती है तो उसको वापस खींच करके वापस लेकर के अपने ट्रैक पे आता है यूजिंग रिमोट कंट्रोल कमांड्स। सैटेलाइट्स को रिमोट कंट्रोल कमांड्स कैसे जाएगी? अगेन थ्रू द ग्राउंड एंटेना। So this information also sent through ground antennas, other corrections also sent through ground antennas. Monitoring stations. So far we know there are 17 monitoring stations. Some of them are in direct control of the Air Force of USA only, and there are others which are, not directly Air Force, but दूसरे तरीके का स्टेशन है, something called NGA, National Geospatial Intelligence Agencies के monitoring stations. You don't need to remember all this. Monitoring station Colorado Springs में है, यहीं पे MCS भी था, साथ में मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगा रखा है। हवाई, केप कार्निवल, एसेंशन आइलैंड, डियोगो गार्सिया, वॉर्जन आइलैंड, these are all Air Force monitor stations. It is in direct control of the US Air Force. Then there are other kinds of monitor stations
not necessarily under the control of Air Force, but in control of somebody else. तो उन्होंने कहा ठीक है, लगा दो, बगल में लगा दो, यहीं से हम भेज दिया. These are located worldwide, as you know. It is in different countries: Alaska, Australia, Bahrain, Argentina, USA में, Washington में, Ecuador, UK, so many places. From all these places, these monitoring stations will collect data from the satellites and send it to the MCS. Again, MCS will analyze this and take action whatever is necessary. So in the diagram, in the photo, you can see a monitoring station. So all this data is collected by the monitor station from the satellites, and it is transmitted to the MCS. Given the location of this monitoring stations, maximum of 11-12 satellites can be monitored by it at the same time. And as we know that satellites are taking 12 hours to complete a revolution of the Earth, तो दिन में 2 बार ये चेकअप होता है, twice a day. Then the data is, of course, passed to the MCS. We have spoken about this. MCS will do what is on your screen. The first paragraph. सर ये एरर ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स क्या है? हाँ, उसके बारे में भी डिटेल में बात होगी. सूडो रैंडम कोड से हम रेंज निकालते हैं, सही? अभी पिछले स्लाइड पे बात किया था. रेंज कैसे निकालते हैं? अगर आप 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, अगर आप 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं, 2 घंटे तक चले, कितनी दूर गए? 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर. मतलब अगर स्पीड नोन हो और टाइम पता हो तो डिस्टेंस निकल सकता है. हाँ सर. तो वही होता है इसमें कि रेडियो वेव्स जो है, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द सैटेलाइट्स. ये कितने स्पीड से चल रहा होगा? सी के स्पीड से, which is how much? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Yes, sir. This multiplied by time. यहाँ पे टाइम T1 पे चला, T2 पे रिसीवर के पास पहुंचा, तो टाइम निकल गया ना? Yes, sir. मान लीजिए 10 बजे चली थी, 10:05 पे पहुंची मेरे पास, तो 5 मिनट चला. 5 मिनट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड विल गिव मी द रेंज की कितनी दूर से आया. करेक्ट और नॉट? Yes, sir, correct. तो रेंज निकल गया. तो जो हमारा सूडो रैंडम कोड था वो टाइम T2 T1 करने के लिए होता है, टाइम निकालने के लिए होता है सूडो रैंडम कोड. लेकिन वो टाइम सही तभी निकल पाएगा जब क्लॉक एकदम परफेक्ट हो, एकदम 100% परफेक्ट हो, तो ही 100% रेंज सही निकलेगी. अगर टाइम में एरर हो गया तो रेंज गड़बड़ होगी या नहीं?
हाँ सर, हो जाएगी रेंज गड़बड़। मान लीजिए आपका घड़ी खराब था, अभी मैंने कहा 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं 2 घंटे, लेकिन आप चले 2 घंटे 1 मिनट, घड़ी गड़बड़ थी। जब आप यहाँ से चले तो मैंने घड़ी देखा, हाँ 10 बज रहा है। वहां पे पहुंचे तो उसने जो आपको ऑब्जर्व कर रहा था उसने घड़ी देखा, तो उसने कहा हाँ 10:05 हुए, लेकिन उसकी घड़ी और मेरी घड़ी में फर्क था 1 मिनट का, तो हो गया ना गड़बड़। यस सर। तो रेंज गड़बड़ गड़बड़ निकली भाई। 1 मिनट और आधा मिनट और 1 सेकंड और 2 सेकंड जो भी फर्क था उतने से गड़बड़ हो जाएगा। सो फॉर करेक्ट टाइम we require special kind of clocks and they are called atomic clocks. They are so precise कि उसमें 1 सेकंड का डिफरेंस आने के लिए मे बी 9 बिलियन ईयर्स विल बी टेकिंग। 10 लाख इज 1 मिलियन, 10 मिलियन इज 1 बिलियन। सो 900 लाख साल लगेंगे 1 सेकंड डिफरेंस आने में उस क्लॉक में। And that is why the special kind of clocks are used so that there is no difference in the clocks जो हम यहाँ टाइम T1 करते हैं और T2 करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसमें हम एटॉमिक क्लॉक को यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। So MCS is also monitoring these clocks so that there is no error in the clock as well. सारे सैटेलाइट्स के क्लॉक करेक्टली चल रहे हैं, सो उसका वो भी मॉनिटरिंग चल करता है MCS। सर ये एटॉमिक क्लॉक अपने सैटेलाइट में ही है या अपने जीपीएस रिसीवर में भी होगा? नहीं, सिर्फ सैटेलाइट में है, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। They don't look like clocks at all. It's a machine and it is placed only on the satellites. लेकिन मैच तो मेरे साथ करना चाहिए उसको, तो हम अपनी घड़ी अपडेट करते रहते हैं सैटेलाइट के सिग्नल से, वो हमें करेक्शन सिग्नल भेजता है। सैटेलाइट्स बहुत सारे डिटेल्स भेजता है मुझको, मेनली 2 जो हमने बात किया था, सूडो रैंडम कोड एंड नेविगेशन मैसेज, पिछले में हमने बात किया था ना। यस सर। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमने बात किया था ना कि ये सूडो रैंडम कोड भेजता है और नेविगेशन मैसेज भेजता है। यस। तो नेविगेशन मैसेज में वो क्लॉक करेक्शन भी आती है, सिर्फ पोजीशन ही नहीं होता, उसमें क्लॉक करेक्शन भी आती है, जिससे मैं अपना जीपीएस रिसीवर जो है उसका क्लॉक, नॉर्मल क्लॉक है हमारे पास, क्वार्ट्ज क्लॉक जैसे होता है, क्रिस्टल क्लॉक, लेकिन हम उसको सैटेलाइट के सिग्नल से अपडेट करते रहते हैं। तो हमारा क्लॉक और सैटेलाइट का क्लॉक ऑलमोस्ट मैच करता है, लेकिन थोड़ी एरर रह जाती है, 100% नहीं हो पाता, लेकिन बहुत क्लोज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आ रही है, ये एफएमएस आया, क्लॉक पैरामीटर्स आया। So these are some parameters which are uploaded by the MCS. आगे आएंगे इसके बारे में, अभी इसको मत देखो, मैं इसके बारे में फिर से बात करूंगा। The ground antennas. Maybe there is a monitoring station और साथ में ground antennas. यहाँ से signal is sent upwards to the satellite. The signals are transmitted to the satellite. The satellite or the ground antennas are transmitting the signals on S band frequency. S band कहीं ध्यान आ रहा है?
heard this S band before? In radar, sir. रडार radar. तो ये वही वाले फ्रीक्वेंसीज है, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे ये ट्रांसमिट करता है। एस बैंड की फ्रीक्वेंसी जिस पे रडार काम करता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये भी काम करता है। सो वर्ल्ड में 4 एंटेनास हैं ऐसे। देयर आर 4 एंटेनास which overall cover the whole world or all the areas of the sky, covering all the 24 satellites. So इनका काम क्या है? ये मॉनिटर करते रहेंगे as the satellites are passing horizon to horizon. When the signal is coming from the MCS, this will start transmitting to the satellites. Satellites are designed to receive this automatically as band frequencies. उसमें से डेटा डाउनलोड करेंगे और जो भी काम करना होगा वो करेंगे। So that is ground antennas. As we said, there are 4 of them जो मॉनिटर स्टेशन के साथ में ही है। क्वाजलैंड आइलैंड, असेंशन आइलैंड, डियोगो गार्सिया, केप कार्निवल। So now just for understanding, getting a picture of the scenario, क्या चीज हो रही थी, we can take look at a small map of the various ground antennas or the ground segment basically. So here you are having the map of the ground segment. You can see the legends here. Red one, master control station, blue or a yellow star, alternate MCS, 2 types of monitor station, Air Force and the other type NGA, and ground antennas, the green triangles. So Colorado Springs में master control station, California में alternate master station. Ground antennas located at these places. Florida में Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein Island. And of course, you can see blue and purple dots, which are monitor stations. How many of blue dots you are seeing? How many blue dots? 6 sir. 6. 6 तो ये कौन होंगे? ब्लू डॉट वाले कौन से मॉनिटर स्टेशन है? एयरफोर्स वाले sir. Very Yeah. good, very good. Airforce. And so the purple one is NGA monitor stations. NG. Very good. NGA, National Geospatial Intelligence Agency. उतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि मॉनिटर स्टेशन का काम क्या है, कहाँ है, वो नाम भी याद नहीं रखने, वो नाम भी याद नहीं रखना। काम क्या करता है? दे रिसीव health information, altitude, speed, etc. of the satellites and pass it on to the MCS. This monitoring is done twice a day for 11 satellites, maximum of 11 satellites twice a day. फिर MCS क्या करता है उसका आगे का लिखना। So are we clear about the ground segment now? The user segment. यूजर सेगमेंट में आपने देखा हुआ, आपके पास एक डब्बा होता है जहाज में ऐसा कुछ इस तरीके का या दूसरे तरीके का भी।
So what is there? Either you have an antenna here or installed antenna Monkey Island पे, और नीचे आपके चार्ट टेबल के पास में ये डब्बा लगा होता है. डब्बे में क्या है? तो there are few buttons, a screen, a computer inside, and a clock, inbuilt clock. That clock is a very, very necessary part of the GPS system because ranging is done with that clock itself. Can you please tell me what is the full name of the GPS system? GPS का पूरा नाम क्या बताया था? First slide. Navstar GPS sir. Navstar, very good. Navstar में Navstar क्या stand करता है? What is that stand for? Navigation. Navigation and Navigational satellite Satellite and time timing and ranging. ranging. okay. So is it now making sense? Timing and ranging. Yes sir. रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम करने के बाद सिग्नल कितने बजे चली वहां से सैटेलाइट से, मेरे पास कितने बजे पहुंची, वहां से चलने का टाइम, यहाँ पहुंचने का टाइम, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो टाइम हो गया इतने देर के लिए चला, किस स्पीड से चला. रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. That is all calculation is done by the computer inside automatically. जो सिग्नल चली वो कौन सी सिग्नल चली? वो pseudo random codes. Special type of signal called pseudo random codes is what we check. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक दो बार पढ़ने से समझ में आ जाता है. So user segment में basically antenna, a screen, few buttons to operate the system, a built-in clock and processor. क्या करता है ये? हमने जब रिसीवर ऑन किया तो इट स्टार्ट्स लुकिंग फॉर द सिग्नल. जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं तो रेडियो देखने लगता है कि क्या सिग्नल आ रही है, आप ट्यून करेंगे तो बजा देगा गाना. वैसे ही जब हम स्विच ऑन करते हैं रेडियो अपने जीपीएस रिसीवर को तो इट स्टार्ट्स लुकिंग फॉर सिग्नल कि कौन सा सिग्नल मैं रिसीव कर रहा हूं. इट बिगिंस टू रिसीव, कोई भी जो सैटेलाइट है सामने सबसे अच्छा सिग्नल जिसका मिलेगा उससे सिग्नल रिसीव करने लगेगा. इट विल लॉक ऑन टू दैट सैटेलाइट and it will start downloading information transmitted by the satellites. उसी में आगे प्रोसेस करते हुए जो सिग्नल रिसीव किया उसी को आगे प्रोसेस करते हुए the signal will be received from 3 or 4 or 5 or 6 different satellites. सबका पोजीशन नोट करेंगे, सबका रेंज निकालेंगे, अपने बिल्ट इन कंप्यूटर में मैथमेटिक्स का गेम खेलेंगे, ट्राइलैटरेशन और अननोन क्वांटिटीज x, y, z, latitude, longitude and altitude will be calculated. So पीछे हमने कुछ और भी देखे थे. एफिमेरिस जैसा वर्ड कुछ आया था जो मैंने कहा बाद में देखेंगे. यहाँ पे आल्मेनेक आ रहा है, वो भी आगे चल के अभी देखते हैं थोड़ी देर में. सो मोटे मोटे केस में हम सिर्फ ये देखते हैं कि सैटेलाइट जो ट्रांसमिट करते हैं मैं रिसीव करता हूँ. इट हैज गॉट एनफ ऑफ इंफॉर्मेशन विथ विच आई कैन डू माय पोजीशन फिक्सिंग.
जब फिक्स आ जाता है, जब कैलकुलेशन हो जाती है, तो सेम इज डिस्प्लेड ऑन टू द स्क्रीन। आई थिंक ये फोरोनो का ये डिवाइस आपने देखा होगा जहाज में खूब। So major displays latitude, longitude, but also the speed of the ship and the course is also displayed. Of course, ऊपर में डेट टाइम वगैरह दिखाता रहेगा। ये डिफॉल्ट स्क्रीन है। डिफॉल्ट स्क्रीन में कम से कम इतना इंफॉर्मेशन रहेगा: डेट टाइम, पोजीशन, कोर्स एंड स्पीड। बट इट कैन डिफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ जीपीएस रिसीवर्स। क्योंकि ये मरीन का है, मरीन जीपीएस वी आर यूजिंग, सो वहां पे कोर्स एंड स्पीड इज नेसेसरी। हो सकता है हमारे मोबाइल के इसमें वो ना दिखाए, या कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें दिखा देगा। ये क्या हुआ? ओके, so that's about the user segment. Now the receiver also can be of different types, mainly basically two types. देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, जितने भी हमने इक्विपमेंट पढ़े हैं, सब में एरर होती है। हमने डॉपलर लॉग पढ़ा, एरर थी। ईएम लॉग पढ़ा, कुछ एरर आया। Whatever we have done, उसमें कुछ एरर्स आती हैं because of not the perfect system. We don't have perfect systems and there are so many variables. तो हम variables के बारे में जानते हैं ताकि we can understand कि what are the errors expected. Now this system also has its own limitations and there are some errors. In order to minimize those errors, we apply different methods. One of the method is using two frequencies. हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है error in the range. When we calculate the range, उसमें बड़ा पंगा आता है। We get wrong ranges, and that wrong range is coming because mainly of the time signals. So उसको काउंटर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, we have special kind of receivers which can work on two frequencies. दो फ्रीक्वेंसी पे सैटेलाइट ट्रांसमिट करता है। मैं दोनों रिसीव करता हूं तो डुअल फ्रीक्वेंसी रिसीवर है मेरे पास। अगर सिर्फ एक से काम करता हूं तो सिंगल फ्रीक्वेंसी। Remember that single frequency receivers are used by the civilians. And dual frequency receivers are used by defense services. So what we use सर डिफेंस सर्विस में भी ओनली यूएस के पास ही होगी ना इसकी अथॉरिटी, दूसरी डिफेंस सर्विसेज को तो ना दे रखी होगी। yes, and allied forces जो यूएस के साथ मिलकर लड़ते हैं। हाँ सर। यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, they all can use this data. जिसको ऑथराइज करेगा, जिसको वो सब यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन कि तो वही का होना चाहिए, लेकिन हाँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग अलग होता है तो थोड़ा आपस में शेयर करते हैं। तो यूएस डिफेंस इसलिए नहीं बोला, मैंने बोला डिफेंस सर्विसेज मिलिट्री ऑपरेशंस में जो भी यूज होता है।
So single frequency and dual frequency is one method of improving the accuracy of the system. There are other methods also. Some of the method is also applied for civilians. हम लोग को भी कुछ सर्विस मिलती है जिससे मेरा पोजीशन फिक्स और ज्यादा इंप्रूव होता है. All right. So few basic things. Some review questions. Look at them, try to verify, think, and see if you are okay with this questions. All good? Yes, gentlemen. Yes, sir. You can answer all of these. आंसर कर सकते हो कि नहीं? चुप हो जाते हो तुम लोग, पूछता हूं तो. Okay, no issues. Now we take the next step. जनरल आर्किटेक्चर तो समझ में आ गया, सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं. Now we take one more step towards understanding कि काम कैसे करता है जीपीएस. So remember, अच्छा चलो बोर्ड पे चलते हैं. आ गया. Okay, let me go to the board. Board visible? बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So now what we are saying, let us say on the surface of the earth there is a receiver somewhere, and in the sky there are satellites moving in the orbits. There are satellites. Now we have understood that there are multiple satellites in the sky. Now these satellites are transmitting electromagnetic waves, radio waves. There are two frequencies which are transmitted. Okay, रेडियो में से कितने फ्रीक्वेंसी पे आता है जी? 92.7. 92.7 मान लिया. रेडियो सिटी कितने पे आता है? 94. 91.1. आते नहीं मरे यहाँ पे. That means information can be transmitted on various frequencies. Same way, the satellites also are transmitting on two frequencies. They are named as L1 frequencies and L2 frequencies. Why L1 and L2? Because they are L band frequencies. जैसे S band, X band होता था, वैसे ही L band frequencies. Frequencies को हम bands के रूप में भी जानते हैं, अलग अलग बहुत तरीके से नाम देते हैं. हम MFHF, VHF भी बोलते हैं. हम L band, X band, S band, KU band, C band वो भी बोलते हैं. बहुत तरह के नाम से बुलाते हैं. So these are L band frequencies, और उसमें जो frequency है we call them L1 frequency and L2 frequencies.
माई रिसीवर कैन बी डुअल फ्रीक्वेंसी, तो मैं दोनों पे रिसीव करूंगा। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो मैं एक फ्रीक्वेंसी पे काम करूंगा। L1 is the frequency which is used by the civilians. Civilians use only L1, while defense services will use L1 and L2 both. L1 is the frequency which is 1575.42 megahertz, and this one is 1227.60 megahertz. So ये तो कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया 93.7, 91.1 FM जैसे आपने कहा। अच्छा बताओ 90 रेडियो मिर्ची पे क्या बज रहा था और 91 FM रेडियो सिटी पे क्या बज रहा था? रेडियो मिर्ची एंड रेडियो सिटी दोनों में कुछ अलग अलग बज रहा था, एक ही बज रहा था? अलग अलग था। अलग अलग, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट चूंकि रिसीवर दोनों से एक ही काम करता है तो यहाँ पे कॉमन तरह की इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है। तो क्या क्या चीजें ट्रांसमिट की जाती है भाई यहाँ पे? L1 पे क्या आता है, L2 पे क्या आता है? तो इनमें जो ट्रांसमिशन होती है, पहला चीज है सूडो रैंडम कोड्स, पहला जो है दैट इज सूडो रैंडम कोड्स। देन समथिंग कॉल्ड एफिमेरिस, एफिमेरिस डेटा। अभी बात करेंगे कि क्या चीजें हैं। Then what is transmitted? Something called almanac. Almanac data. Something more, clock corrections. So these are the information transmitted on these two frequencies. Now we already know about this pseudo random code. ये किस चीज के लिए यूज होता है? Range. Yes, range. Very good. Range के लिए। और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। Ephemeris data is giving the exact location x, y, z, or rather x2, y2, z2, x1, y1, z1, x3, y3, z3, इसका लोकेशन के लिए होता है एफेमेरिस डेटा। इस एफेमेरिस डेटा से मुझको पता चलता है कि कौन सा सैटेलाइट कहां पे है एग्जैक्टली अभी सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में। Where are these satellites located? XYZ क्या है? Latitude, longitude and altitude. Exact location. Then what is almanac? Almanac is also about the location of the satellites. Almanac का नाम सुना है आपने? Nautical Almanac. Yes, sir. क्या होता है उस बुक में, उस एल्मेनेक में क्या चीज आपको मिलता है? Details about stars and all. Details about stars and all that. Very good. तो यहाँ पे almanac is about all the satellites in one book. almanac में सारे 2400 सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन एक बार आती है कि कौन कहां पे होगा, जबकि एफेमेरिस सिर्फ अपना बताता है कि मैं यहाँ पे हूं, ये अपना बताता है मैं यहाँ पे हूं,
ये अपना बताता है, मैं यहाँ पे एफिमेरिस इज इंडिविजुअल, हर सैटेलाइट का अलग अलग, लेकिन एल्मनेक क्या, वो किताब जिसमें 2400 के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। द सिग्नल्स विच इज ट्रांसमिटेड, विच इज क्लॉक करेक्शंस, किस लिए होगा यूज, व्हाट विल इट बी यूज्ड फॉर? Any kind of clock error, sir. टू करेक्ट द क्लॉक। क्लॉक जो यहाँ का क्रिस्टल क्लॉक है, इसके करेक्शन के लिए, ताकि रिसीवर का क्लॉक और सैटेलाइट का क्लॉक मैच करता रहे। तो इसमें ये तीन चीजें जो हैं, एफेमेरिस, एल्मनेक एंड क्लॉक, वो एक पैकेट में आता है, एक जगह आता है। एंड द ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग हियर इज कॉल्ड नेविगेशन मैसेज। नेविगेशन मैसेज जो हमने देखा था स्लाइड में पढ़ते हुए, इट इज ट्रांसमिटिंग सूडो रैंडम कोड एंड नेविगेशन मैसेज। तो सूडो रैंडम कोड तो होता है, अभी आगे देखेंगे उसके बारे में, बट नेविगेशन मैसेज में you are getting ephemeris data, almanac data and clock correction, all the three. These are all of course digital data. Understood? अभी तक की बात क्लियर हुई या नहीं? Yes. कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्लियर हो गया सर। हो गया सर। थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और हम रगड़ करते चलेंगे अभी, और जिद्दोजहद करते चलेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। सो अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन जैसे, व्हाट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी of GPS? Can you tell me this answer? Carrier frequency is L1 and L2. These are the carrier frequencies. Remember 98.3 पे क्या चल रहा था? गाना। 91 FM में न्यूज। तो न्यूज कहाँ किस पे आ रहा था? एक कैरियर पे आ रहा था। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने ट्यून करी थी वो था कैरियर, और इंफॉर्मेशन क्या था? न्यूज, गाने, कमेंट्री वगैरह वगैरह। सो जो इंफॉर्मेशन है मेरे लिए ऑन द एफएम रेडियो इज व्हाट आई हियर, बट हाउ इट रीचेस मी ऑन अ कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या? 98.3, 106.2, 102.6, 91, 107.8. There are so many of the frequencies which are used to transmit information to us. Information क्या है? वो गाने, news, jokes, etc. etc. So the carrier frequencies are L1 and L2. What are these frequencies? 1575.42 megahertz, as we said just now. Other one 1227.6 megahertz. So this is the carrier frequency. Then what is the data transmitted on this? We already have understood what information is transmitted on these two frequencies.
Yes. Range क्या and क्या? position, sir. Come again? Range and position. नहीं, अभी इसके पहले बोर्ड पे क्या लिखा था यहाँ पे? Pseudo Pseudocode. Pseudo random code और क्या? pseudo random code, almanac Ephemeris and data. ephemeris. Almanac, Clock, ephemeris clock और correction. clock correction. All clock. तो लास्ट वाली जो 3 थी वो नेविगेशन मैसेज में था या नहीं? Almanac, ephemeris, clock correction. Yes, sir. So the data transmitted on these frequencies are called something like CA code, something called P code. Now these two are the pseudo random codes. There are two types of pseudo random codes, CA code and P code. And there is also navigation message. So when we say what is the data transmitted on the carrier, what are the carrier frequencies and what data transmitted? We have carrier frequencies L1 and L2, L1 being so and so, L2 being so and so. On L1, what is transmitted? CA code, P code and navigation message. Remember navigation message में वो 3 चीजें होंगी. On the L2 frequency, what is transmitted? P code and navigation message. So here only P code and navigation message, but here CA code, P code and navigation message. When the military users are there, they receive both the frequencies. They make use of the CA code, then they make use of the P code. Then they use the P code on other frequency also, try to improve some interpolation kind of situation. ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं जाए. So the military users basically use this code to give more accurate position. You know, the name of the CA means force acquisition. And P stands for precision. Precision नाम ही बता रहा है कि ये प्रिसाइज पोजीशन होगा. एंड आपने सुना सीए को मैंने बोला कोर्स एक्विजिशन. कोर्स का मतलब क्या है? चेक द स्पेलिंग एंड फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्स. COARCE. समवेयर यू माइट फाइंड दानेदार रहता है सर. कम अगेन. मोटे दाने जो रहते हैं उनको कोर्स बोलते हैं. मोटे दाने, रफ. ठीक है ना. ये सरफेस इज वॉल इज कोर्स सरफेस, दिस इज फाइन सरफेस, स्मूथ सरफेस. रुखड़ा जो जिसको बोलते हैं, रूखा जो होता है सरफेस. तो ये रूखा पोजीशनिंग सिस्टम है, ये प्रिसाइज है. ठीक है. सो डज इट मेक सेंस? CA कोड एंड P कोड. This one will be used by CA code is used by civilians. P code is used by defense service. बट पी कोड तो सर L1 L2 दोनों में आ रहा है अपना. Yes, तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी भी यूज करता है ना. यहाँ वो एक्चुअली P code and CA code both are used by the military. हम सिर्फ ये CA code यूज करते हैं, वो दोनों यूज करते हैं और दोनों फ्रीक्वेंसीज भी यूज करते हैं. ये और ये दो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं प्लस दोनों कोड भी यूज करते हैं. खत्म ही हो गया 2 मिनट. All right.
So there is P Yes. code, there is CA code and P code. Both are used by the defense services. So the CA code, the service that it is providing, the kind of position it is providing is called SPS, Standard Positioning Service. CA code provides SPS, which is used by the civilians. The P code provides a service called PPS, Precise Positioning Service, which is used by the defense services. Understood? Yes, sir. Understood. So we'll talk further about this. Now the time is up. We'll take it up further tomorrow. I think, yes, we'll have class tomorrow. So we'll meet up tomorrow and then we talk further about this. We take it forward, the GPS system. All right. Any questions? Any questions? Nice, sir. अभी तक No, Lots sir. of questions. Thank you, Don't sir. know what Thank to you, ask. sir. Right? Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Chalo, kal Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye. Thank Signing you, off sir. now. Thank Bye, you, sir. sir. Bye-bye. Bye-bye.